आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। It's not only a legal thing for me, it's for majority of the people of Jammu and Kashmir. It's an emotional issue, and finally after 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी hearing हो रही है, and we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस, द डिबेट्स, द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट टू सबवर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब की अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी clear about it. It's the idea of India that JK, Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस idea of India के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। It's the constitution of this country जिसने हमें guarantees दी कि being a unique state, having a unique identity, जिन्होंने हमें इंश्योर किया, they give them a certain safeguards कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। That constitution of India is on trial. It is the judicial system of this country which is the custodian of the rights of people of India, including Jammu and Kashmir. That's on trial. It is the democratic system जिसको हम कहते हैं we are the mother of democracy, जिसमें the will of the people is supreme। यानी लोग क्या चाहते हैं, ये वही लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की वही विल है जिन्होंने 1947 में बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उसके बावजूद पाकिस्तान को दरकरार करके अपनी मर्जी से इस मुल्क से हाथ मिलाया। आज उस डेमोक्रेसी का भी मुकदमा अंदर चल रहा है। इट्स द ट्रस्ट जो लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा किया कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमने एक जमहूरी सेक्युलर मुल्क के साथ हाथ मिला के अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। और ये वो ट्रस्ट है जो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पे किया, यहाँ की लीडरशिप पे किया। आज उस भरोसे का भी जो है अंदर मुकदमा चल रहा है। आप लोगों को याद होगा, याद नहीं होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पूरे मुल्क के लोग जिस वक्त जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान के हमलावर आ गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने निहत्थे हाथों से लड़ा, और उस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी भी आई हमारी मदद के लिए। और उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने ये देखा कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी है दैट शुड नॉट बी सबवर्टेड। आज उसी जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी का जो है उसका डेमोक्रेसी का इम्तिहान है कि क्या करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या जो इस मुल्क के लोग हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मुल्क आईन के मुताबिक चलेगा, whether this country is going to run according to the constitution of this country or it is going to run according to the divisive agenda of a particular party. I know, मुझे मालूम है कि जो रूलिंग पार्टी है वो सब कुछ कर, they are trying to do everything to justify their bizarre
arguments. جیسے انہوں نے ایک argument تو because unfortunately there are loopholes in each and every legal system, اور شاید that is the reason why rapists, murderers, criminals are roaming free. Either they have not been convicted, they have escaped the conviction, or they are on parole, or they are on bail, while as the innocent people are languishing in jail because of these loopholes. I'm sure BJP is going to take advantage of that, those loopholes, to justify them their unconstitutional action. So my point is that the ruling party has already come up with some bizarre explanations, jisko Supreme Court ne fortunately ignore kar diya. They say the situation in Jammu Kashmir has improved. We have a Kashmiri Pandit Mohit Band here. So اگر سچویشن واقعی امپروو ہو گئی ہے تو کیا وجہ ہے جو کشمیری پنڈت پچھلے 30-35 سال سے وہاں پر رہ رہے تھے بہت مشکل حالات میں, ڈسپائٹ the militancy being at the peak, they were able to survive that. آج پچھلے 5 سال سے نہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں کشمیر چھوڑ کے بھاگے ہیں. ان سے پوچھیے اگر سچویشن اچھی ہے تو مجھے یہ بتائیے کتنے کشمیری پنڈتوں کو یہ واپس بسایا انہوں نے, بلکہ جو لوگ وہاں تھے وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں because this is the real situation. It is not Kashmir File movie that they are promoting. This is the real situation in Kashmir that you can see. یہ کہتے ہیں کہ وہاں جی ہم نے بہت جو ہے ملیٹنٹس کی کمر توڑ دی, ٹیررسٹ کی کمر توڑ دی. But the point is, this is not their job. This is the job of the security forces and the army of this country. ملیٹنٹس کو مارنا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ ہماری آرمی, ہماری سیکورٹی فورس, اینڈ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب آف اٹ بیکاز فار دا لاسٹ 35 ایئرس یہاں کی آرمی, یہاں کی سیکورٹی فورسز, دے ہیو لیڈ ڈاؤن دیئر پریشیس لائفز ٹو ڈو دیئر جاب, اینڈ دیٹس وائی elections were possible in 96 onwards because the security forces brought the situation under control. So the credit, why is BJP taking credit for it? And secondly, 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں کہ جی انہوں نے بندوق اٹھا کے لیے اور کشمیر میں ملیٹنٹسوں کا مقابلہ کیا, تو مجھے یہ بتائیے کیا is this the reason that you have to give collective punishment to the people of Jammu and Kashmir to kill the militants? کیا ملیٹنٹس کو مارنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے کپڑے اتارنے, ان کی ڈگنیٹی ختم کرنا, ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنا, یہ ضروری ہے کہ آپ ملیٹنٹوں کو تو آرمی مار رہی ہے. کیا اتنی کمزور ہے یہ سرکار کہ ملیٹنٹ مارنے کے لیے ان کو سارا جموں کشمیر تہس نہس کرنا پڑا؟ ان کو آج جموں کشمیر میں کنٹرول کرنے کے لیے آرمی اور سیکورٹی فورسز کم پڑ رہے ہیں, اس لیے جو ان کی ایجنسیز ہیں, ED ہے, NIA ہے, CBI ہے اور باقی ایجنسیز کو جموں کشمیر کے لوگوں کو دن رات تنگ کر کے ان کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے. Is this the improvement that's there in the situation? I would like to know. اور 100 سے زیادہ کشمیری پنڈت جن کو منموہن سنگھ جی نے ایک اکنامک پیکج دیا تھا, امپلائمنٹ پیکج دیا تھا, اور منموہن سنگھ جی کے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں واپس چلے گئے تھے. آج اس میں سے بھی 100 لوگ جن کو جاب ملی ہے وہ کشمیر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ تو ملیٹنسی ہو, دیٹ از اے سمٹم, وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم کچھ اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ایک تھاٹ پروسیس ہے جو علیحدگی پسند ہے. انہوں نے اگر کسی کی کمر توڑی ہے تو وہ ہم جیسے مین سٹریم پالیٹیشینز who believe in the idea of India, جو ہندوستان کے آئین میں, ہندوستان کے آئیڈیا میں, ہندوستان کی جمہوریت میں, ہندوستان کے سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں, انہوں نے اس کی کمر توڑی ہے. انہوں نے سیپریٹسٹ کو آکسیجن دیا ہے, انہوں نے سیپریٹسٹ ایلیمنٹ کو آکسیجن دیا ہے. انہوں نے, ایکسکیوز می پلیز, ڈونٹ ڈسٹرب می, بات کرنے دیجیے پلیز. تھوڑا آگے آ جائیے. انہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں کمر توڑ دی, کمر کسی کی نہیں ٹوٹی. کمر انہوں نے جو جموں کشمیر میں آئیڈیا آف انڈیا پہ بھروسہ کرتے تھے, اس ملک پہ بھروسہ کرتے تھے, اس ملک پہ یقین کرتے تھے, اس کی کمر توڑ دی انہوں نے. بلکہ جو سیپریٹزم کرتے تھے, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں, ان کو انہوں نے اسٹرینگتھن کیا بیکاز وہ لوگ 370 میں یقین نہیں کرتے تھے, ہم لوگ 370 میں یقین کرتے تھے. So
I appeal to the collective conscience of this country. میں پورے جو اس ملک کے کلیکٹیو کانشنس کو اپیل کرنا چاہتی ہوں, including the institutions of this country, whatever is left of those institutions. We know what has happened to the institutions of this country. And fortunately, we still have some faith in the Supreme Court of this country. میں ان کو اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا the country believe faith of the majority community is رگھوکل ریڑھ صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائے. I am not talking about those Gaurakshaks who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer Sada Chali Aayi Ram Pran Jaye Par Vachan Na Jaye. So I think that vachan is on trial in the Supreme Court today. Rest, I have said what I have to say. So if you have any questions, please ask. मैडम आप सरकार की बात नहीं है, कश्मीर के भी कुछ लोग हैं जैसे शैला राशिद, वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, कह रही हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए. देखिए, I don't want to go into that. मैडम आपने कहा था कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन कल बहुत सारे लोगों ने तिरंगा उठाया है. जी 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 बिल्कुल. आप बताइए, आपने तिरंगे से जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी शिकायत नहीं है. शिकायत है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तिरंगा दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और एक झंडा दिया था. हमें वो शिकायत है कि वो झंडा हमसे क्यों छीना गया. बाकी तो तिरंगे की तो इज्जत 1947 से लोगों ने की है, मगर जब आप हमसे उसी कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज रखते हैं, दूसरे को छीनते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोग दूर हो जाते हैं. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड, क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जंजीरों से बांध के अपने साथ जकड़ के रखना चाहते हैं, अपने साथ ड्रैग करना चाहते हैं, थ्रू द बैरल ऑफ गन, थ्रू द एजेंसीज, थ्रू UAPA, थ्रू ड्रैकोनियन लॉज, या आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क की उंगली थाम के सर ऊपर उठा के आपके साथ चले. नाउ वी लीव टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. थैंक यू.